So a very good morning to everyone. Good morning, sir. Good morning. Okay, so we are going to start with visualization today in the Power BI. We are going to cover how to create your first visual. This is the agenda for today's session. How to create our first visual. In the previous 2 days, we have seen how you can import data into Power BI, how you can work with the sample data or dummy data, how you can uh, modify or transform your data in Power Query. This is what we have covered so far. Today, we are going to look at how to build visuals and how to do data analysis and how actually we have to decide what kind of visual we have to create and what kind of uh, fields we have to select to do our visualization. Okay. So with this, I am sharing my screen and we'll work on the same file which we had worked yesterday. So we were working on the sample data. So we will continue with that sample data only. So just keep your Power BI open and I'm sharing my screen now. If you have any doubts regarding previous session, you can ask me if you want me to show anything again, which what we did previously. I can do very good evening to good morning to everyone. Good morning, sir. Good morning. Okay. So I hope my screen is visible to all. Yes, sir. Fine, great. So see, this is the file which we were working on 17th April. We started Yeah, this. sir, I have few questions. Yes, please. So for example, in some of the data, let's say we imported from somewhere else, Mm-hmm. and there was error called null, means the data was not there in those cells, Mm-hmm. and it was showing null. So Mm-hmm. if we need to remove those data or clean those, how to do that? Okay, I will take it up. I will show you. I have some Secondly, data. Huh. while importing some data, there was some errors also, and it shows that there is some mistake in the data, it cannot be loaded. Okay, so we'll do one thing. Uh, Or I'll share. maybe, I mean, I can share those screens with you later on, Yeah, that yeah. file. You can. If you have, if that is a dummy data and not a confidential data, you can share, or maybe you can copy some part of the data and share in the Excel file in the Zoom chat. I will Yeah, work yeah. the same file that will help you resonate with the problem. Okay, I'll show you. So you can do that in the meantime. We'll just start and then in the end, around 8:30 onwards, I'll take that part, whatever your problems are. No problem. Or I Okay. can take that separately in the Yeah, interest yeah, of that time. is also problem. That is also okay. But you share that file in the meantime with Sure. me. Okay. So, what we had done in the previous two sessions is we had cleaned the data and we had created some more additional columns. I'll just go through it one more time. I'll not explain what I had done. I'll just go through it so that we are all on the same page. Okay. So I've opened my Power Query editor and that is going to show whatever we had done with the original data. So this is segment, country, product band. These four words, the dimensions, the text columns. Then we had unit sold, sale price, manufacturing price. The first column that we had built is the profit per unit. Profit per unit we had built by subtracting the manufacturing price from the sales price, and that is how we have got the profit. You will see there are some negative values and positive values. Secondly, we had done this gross sales. Gross sales we had multiplied by multiplying the units sold with the selling price. So that is how we have got gross sales. Discount is there. So sales is gross sales minus discount is your sales, and we can call it as net sales also. So I'm just making it net sales. Then we have COGS. COGS is cost of goods sold. So profit comes from
net sales minus COGS, that is your profit. Then you have date. From the date we had extracted, or it was already there, the month number, the month name, and the year. Then we build up the profit percentage column. How did we build up the profit percentage column? We had divided the profit, then profit with the net sales. And that is how we had got the profit percentage. Now, once we got the profit percentage, we categorize into two parts, whether it is profitable or unprofitable. So if the profit is positive, then we had mentioned profitable. If the value is coming in negative, then we had mentioned as unprofitable. So this is what we had done. Then we had also built up a product ID column with the taking the product name first two alphabets and then adding 001 at the end. So that also we had done using the add column feature, and in the add column, the column from examples. Then we had built one more category column, which is country and segment. So we had taken the country name, put a dash, and then put the segment name. Then country and product, these two columns we had built. And then we had put one conditional column also. I think this I had not done with you all in your batch. I was taking one evening batch also. I think I had done this in that batch. I will just do these columns again. So what is this column showing? This is showing that order, whatever orders we have got. Orders means the units sold. So that units sold are categorized into three parts: bulk order, small order, or medium order. So that I had done based on the order size. Okay. So I'll just open my notepad over here now and just confirm if you can see my notepad. Is it visible? Can you see my notepad? Yes. Okay. So what we need to do is we need to classify the profit. We need to categorize the profit. Okay. And how we are going to do that? If not the profit, sorry. Profit we had already done. We'll categorize the order size. So if the order units sold, and we'll say the category. So if the unit sold is more than 3,000, then we will call it as a bulk order. If the unit sold is between 1,000 to 3,000, then we'll call it as a medium order. And if the unit sold is less than 1,000, then we are going to call it as a small order. So this is what we are going to do before we start visualizing the things. Okay, one column we have to build. I'm just removing this column because I had done it already. So I'll just click on this, and this GP ratio we don't want. So I'm removing these two columns. You already don't have these columns. You don't have to do anything. Now, how do I add a conditional column? Everyone knows that. So we need to go to add column section. In the add column, there is a conditional column. So we'll click on conditional column. So in the conditional column, you will name it as order size. Order size. And we'll say, see, it is the if condition, it is saying column name. So what column are this categorization is based? Tell me. On what column we are doing this operation? Order form. Order size. So order size means units sold. We are doing it on units sold. So see, units sold and category we have to put. So units sold, if it is more than 3,000, then I should call it as a bulk order. So if it is greater than 3,000, then I would like to call it as bulk order. If the order size is more than 3,000, units sold is more than 3,000, I want to call it as a bulk order. Else what? Else
do I have only one condition or there are two conditions in this particular case? Two condition. Two conditions. So I cannot see this or that. I cannot see if this, then this, else this. So I need to add one more clause. So I will click on one more clause, add clause. And again, I will select unit sold. And then again is greater than or equal to, we can take, and we'll take 1000 because the next lot size is 1000 to 3000 and I want to call it as medium order. So I will write down here medium order. And in the else, now do I need to give another condition or it's over now? We can directly put whatever is remaining, sales order, small order in the else clause. Yes, sir. Yes. Right. So the thumb rule is that wherever you have any conditional or any criteria, the thumb rule is that number of conditions minus one is the clauses you need to add in the if. I'm repeating, I'm just typing it here. Whenever you have to put any if condition. So the number of ifs, or you can say clauses, is equals to total conditions minus one. Because the last condition doesn't require a if, it just requires the output that you want. So we'll click on OK and see what happens. We've got this column order size. So let us check whether we are getting the right answers or not. Okay, now what will happen is you might have a big table. So you might have to scroll here and there again and again to see the things. So what you can do is you can collapse all these things which are not required. So I've just collapsed the query settings. I've collapsed the query. So I get a full space to see the things. Okay. And if required, you can hide some of the columns or other things. I'll just show you some more things also when we in the home menu, what all you can do. But we want to check whether the order size is giving us a proper result or not. So this is the unit sold. The first unit sold category is having 4490. What I can do is I can bring this unit sold near to that column which we had added, so as to see the comparison. So I have to do this thing. Okay, so I'll just place it over here after the year. That will anyways not affect the visuals and all these things. So we have this unit sold and we have the last column, which is order size. So the first unit is 4492. That means there's more than 3000, right? So what should have been the answer in this particular case? Unit sold? Bulk order. Bulk order. And we have got bulk order. The next unit sold is less than 1000. So what should be the category in this case? Small order. And we are having small order. The third category is 2532. It is between 1000 and 3000. So what should be the category? Medium order. Medium order. And we are getting medium order. So we are getting all the answers. So are you now comfortable in adding new columns to the data based on custom column, based on conditional column, and based on your column from example? Because you are taking all the three cases. Can you give me a confirmation? Sonali ji, are you getting? Yes, sir. Yes. Okay. So now we will close this and we'll come back to our Power BI and we'll start working with the visuals now. There are so many things you can do in the Power Query Editor, but we'll do one at a time. We'll do small baby steps. I'll not teach you everything, because if I teach everything in one go, you will forget everything. So there'll be no point in doing this. So let's do a mix and match, one trick at a time of Power Query and then visualization. Okay. So I've loaded my data. I've added one column. Okay. So it should show me the order size column also. It was not there earlier in my data set.
Now it should show. Okay. So whenever you do any changes in the data, whenever you do any changes using Power Query, it will always reflect in your data pane. Okay, data tab. So if I check my data tab now, see all these what you can say visuals in the Power BI screen are flexible. That means they are adjustable. So you can like collapse them wherever you don't require them. And this is the canvas. This is the area where you will build. See, it is written build visuals with your data. Select or drag fields from the data pane onto the report canvas. So this is called as a report canvas. Okay, let me use some annotations over here. This area is called as a report canvas. This area, okay, and we are going to work with this area. Okay, so this is basically called as a report canvas. This is called as a report canvas. We are going to build our reports over here. Report canvas. And how do you build your reports? You have to bring your data into this pane. Okay. So how do I bring the data? See, I'm not seeing the data tab. So you can go to these 4 buttons you will see. Do you also see the same buttons in your Power BI also? On the right hand side, this cylinder, this kind of cylinder with a bar and this brush and bar. Do you see all these or not? Tell me. If you're not able to see any of these, so what you can do is you can go to view, and in the view you will have this data, build and format. So if something is unchecked, for example, I just click on this. Now you see that icon has gone from here. Are you all with me? I'm talking about this area. Let me highlight this area. Where I want your attention to go here. Okay, I'm just marking it with red wherever I want you to look. So now see what is happening when I'm clicking on build. It is giving me 4 icons over here. 1, 2, 3, 4. When I remove the build and I remove the format, I only have the data. If I remove the data also, I don't have anything except the plus symbol. When I click on this plus, now it gives me an option what you want to add. Only show one active pane. So I'll click on this. So it will show me only one active pane. Add or remove panes. What all panes I want to add? So I want to add my data pane. I want to add my build pane. I want to add my format pane. I want to add Copilot. I want to add bookmarks. I want to add selection. Whatever you want to do. Okay, performance analyzer. All these things I'll explain you what it is. But you can keep all these here. Yes. Anyone? Any doubts? यस सर, एक बार ये अगेन रिपीट करेंगे क्योंकि मेरे वाले पावर बीआई में ये विंडो नहीं आ रही, जैसे सिलेंडर वगैरह ये नहीं आ रहे। अच्छा, देखिए करना क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि आपका पावर बीआई और मेरा पावर बीआई में जो सेटिंग्स हैं वो सेम है या नहीं है। लेट मी रिमूव ऑल दीज एनोटेशंस फर्स्ट। देखिए, यू हैव टू गो टू योर फाइल मेन्यू, एवरीवन, and go Okay. to options and settings. And go to this gear button, options again. फाइल में जाना है, ऑप्शंस एंड सेटिंग्स में जाना है, फिर से ऑप्शंस में जाना है और रुकना है थोड़ा सा। नाउ यू विल गेट दिस डायलॉग बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है। दीज आर द सेटिंग्स पेन। एक्सेल में भी ऐसे ही होता है। व्हेन यू गो टू फाइल मेन्यू एंड ऑप्शंस यू गेट द सेटिंग्स पेन। तो ये यहाँ सारा सेटिंग्स दिखा रहा है। वी हैव ग्लोबल एंड वी हैव करंट फाइल। नाउ कोई बता सकता है कि ग्लोबल का मतलब क्या है और करंट फाइल का मतलब क्या है? Why there are two divisions in the settings? One Global, is for basically it's a deemed setting or a default settings. what? Default settings of Power Power BI BI. for display. हाँ, that is global you are explaining. Yeah, And current file, this is the existing file which we are using.
Right. So global settings means it is a universal setting which will apply to all the files when you open in Power BI. All the settings, which is a default setting that will apply in the global setting that you do. But there are some settings which you can do file specific. So when you go to current file and you do any regional settings over here, like I want to change the language of this particular file. I am creating this file for, let's say, a German client or a Japanese client. I want to use Japanese language in the reports. So I can select Japanese language. There is an option Japanese. So it will convert everything into Japanese language. Okay. But that will be only for this file. That will not affect my other files. Okay. So I can do this current settings for the current files I want. Okay. Not for all. Let me convert this to back to India. IND. So we have India, Nepali. Where is English? Okay. So we have English, and there are so many English options also. So for English, you have so many options. Let us select UK, India also we will do. Okay. Now, in the global setting, what I wanted to do is check is go to this preview features. Go to this preview feature and what all you should tick. What all you should be ticked. What all should be ticked in your this thing. First thing is this shape map visual. Is it ticked? Just check. Shape map visual, it has to be ticked. Put a tick over here if it is not ticked. Yeah. Then Q&A for live connected analysis services database. You put a tick over this also. Okay. Then your on object interaction. This should also be ticked. On object interaction. This should also be ticked. We don't have this on object. It should be there. On object interaction. It's not there. Maybe the old version then. Maybe possible. You have to update your version. You have to use the latest version. I'm using the latest thing. So you have to update your Power BI and you will see. What about others? Are you able to see all these on object interaction? I'm just marking it. दिख रहा है मेरे वाले वर्जन में तो है। देखिए मैं क्या क्या आपको टिक कराना चाहता हूँ। ऑन ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन इस पर टिक होना चाहिए। देन ये स्पार्क लाइंस, मैट्रिक्स, विजुअल्स, ये सब नए नए चीजें इन्होंने ऐड करा है। ठीक है, यू शुड हैव अ टिक्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स। शेप विजुअल, शेप मैप विजुअल, अदरवाइज आपका ये काम नहीं करेगा, मैप वैप नहीं काम करेगा। अभी हम वी आर गोइंग टू क्रिएट अ मैप नाउ। ठीक है, तो यू डू दैट, you put a tick on this, and once you have done that, what you need to do is you need to click on OK। उसके अलावा देखो और कोई सेटिंग्स करने का जरूरत नहीं है। हाँ, व्हाट वी कैन डू इज सपोज यू वांट टू हैव ऑटो सेव ऑप्शन अपडेटेड, सो स्टोर ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आप टाइम रखना चाहते हैं। यू कैन डिफाइन द लोकेशन ऑल्सो। दिस इज व्हाट यू कैन डू। कीप द लास्ट ऑटो रिकवरी वर्जन इफ आई क्लोज विदाउट सेविंग। तो ये आपको रखना है, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। तो जो लास्ट आपका ऑटो रिकवर्ड होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक सर है। सर हाँ ये बोलिए। प्रीव्यू फीचर्स में लास्ट में जो कुछ टिक करना था वो थोड़ा दिखाइए और एक बार तो। देखिए, देख लीजिए, मेरे लास्ट में में, जो टिक है वो आप में होना चाहिए। लास्ट में सर। लास्ट। हाँ हाँ सर, एक सेकंड। What I'll do is I'll just take a picture of this and put it in the group itself. So it will be beneficial. पूरे का ही ले लेता हूँ तो पता रहेगा कहाँ से आया है। वो BI ग्लोबल सेटिंग्स, फाइल, ऑप्शंस, ऑप्शंस।
So you will get it in the group, and I'm again sharing the next one also. Okay, so now let us click on this OK button and let us proceed. Now you have enabled one or more preview feature that require restarting Microsoft Power BI desktop. These changes will take effect after you restart the application. Let us restart the application. So we'll close Power BI. Everyone close your Power BI and restart it again. Okay, start it again. I'm just putting it on. And see, whenever you want a quick restart or quick thing, what you can do is you can put your regularly used applications on your taskbar. How do you do that? Suppose this is Power BI, or I want to put this Power Apps on my quick access toolbar. This toolbar, you can right click on this and say pin to taskbar. Pin to taskbar. So what will happen is it will always appear on your taskbar. See, this is the new icon I've added to my taskbar. Now I want to open this Power BI. Everyone is after ChatGPT. Okay, everyone is after AI, but I'll tell you, there is something good which has come up, which is Copilot. It is a Microsoft product again. And Power Apps. These are two powerful new technologies and applications you should know. I will be soon creating a video on these two, but they will save a lot of time and lot of efforts of everyone. These two tools. So I'm restarting my Power BI. Once you do that, you will also see all these apps and all these things we have done in the Power BI application. Okay, so now let us start building a visual. So we'll go to financials. Now, what should we analyze first? How should we start with? Okay, because see, in the build visual pane, can anyone tell me how many different graphs, charts, visuals we can create in Power BI? Just give me a number in the chat. आपको कितने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? Let me count 1, 2, 3, 4, 5, 6 are there in one row. 6 icons in one row. And there are 1, 2, 3, 4, 43. 5, 43. 6, 7. 7 rows. Okay, so 7 into 6 is 42 plus 1, 43 plus there are some 3 dots also here. So there are 42 plus visuals, 42 plus visuals, which is there, and you can add more also. That is why it is Power BI so powerful. In Tableau, those who know Tableau, there are 24 visuals in Tableau. 24 visuals in Tableau, and you cannot add more. You can create custom visuals in Tableau, but you cannot add more. In Power BI, it is evolving every day. And when you click on this add more visuals, you have to import, you have to log into your Power BI, and then you will be able to do it. I'll do it in a later stage. Now, how to start? Like, what should be your first visual? Okay. So it depends on what you want to create, and they have arranged it in a very systematic manner. Bar and column charts are together, line and area are together, waterfall funnel and starter are together, pie donut and tree map are together, maps are together, gauge card and KPIs are together, slicer is there, table and matrix, AI visuals, other means these are integrations with Python, paginated report, Power Apps, Power Automate, and this matrix view. Every new things are coming up every day. Okay, so I will also give you one PDF which will help you in learning, understanding what chart to use for what data and which chart to use when, because there are so many. When you have so many options, there is always a confusion. कब क्या काम में लेना है?
और वो हम क्लियर करेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट विजुअल which is a very basic visual but again very useful. So that is the bar and column. अब देखिए यहाँ पर है ना, I will take some time to explain these icons to you. अच्छा, let me know आपको कितना पता है इसके बारे में. What is a stacked bar chart? Stacked bar chart. What do you understand by this stacked bar chart? What is the difference between column and bar? यहाँ से शुरुआत करते हैं, स्टैक को छोड़ते हैं. Sir, कॉलम. it will be from it will be like horizontal from left to right. What is horizontal? मतलब bar या column? What you are talking about? Sir, bar. Okay. So I'm typing bar is horizontal from left to right. What about column? It'll be vertical then. Vertical, then bottom to top. Top to bottom or bottom to top. Okay. Any other difference? This is the major difference basically. Bar is horizontal, column is vertical. But when to use a bar chart and when to use a column chart? Or they are alternatively they can be used. When to use a bar chart, when to use a column chart? Any idea? Okay, let me give you an example. Let's come to the practical part now. So bar chart is a horizontal chart. When do we use a bar and column chart together? Like in combination, I'm asking. When we do use this category of charts? Whenever you want to do any comparison. Whenever you want to do any comparison between two variables. Between two variables. Two segments. Two areas. Then we can use and based on one common field. Example, you want to compare the score of Virat with Dhoni. Then you can use a bar chart or a column chart. एक तरफ विराट होगा, एक तरफ धोनी होगा. किसने कितने रन्स बनाए, कितने सेंचुरीज बनाई, कितने सिक्सेस मारे, कितने फोर्स मारे, वो हम कंपैरिजन कर सकते हैं बार और कॉलम के साथ में. ठीक है. Let us come to the Power BI and let us create this. Now, how do you create a chart? You will click on this visual icon, and when you click on this icon, blank pop-up will pop up over here. You can drag it, you can increase the size. I'm just making it full size. And what you'll see here is select or add data to populate this visual. So you have to populate, you have to give some data to this visual so as to populate this, as to make this active. This is just a structure. Now, where is our data? Here on the right hand side is the data. Now, what I want to compare, based on that, I will put the data into the visual. So tell me, what should I select here now? What we'll do is we'll select country. And we'll select units sold. We will compare the units sold in different countries. What is the unit sold in all the 5 countries that we have? So we'll click on country. Now, when I click on country, you will see a suggest a visual popping up. Okay. And you will see a country already moving. And then I will select units sold. So you can type also. If there are so many things, you can type and you can select. Now, what do you see on the screen? What do you see, guys? प्रॉफिट पर यूनिट वाइज कंट्री, हर कंट्री में कितना प्रॉफिट आ रहा है उसका ग्राफ दिख रहा है. प्रॉफिट नहीं आ रहा है, यूनिट सोल्ड आ रहा है. कितना यूनिट बेचा है हमने प्रॉफिट का लिया, हमने तो यूनिट सोल्ड लिया है ना. हाँ हाँ, यूनिट सोल्ड. हाँ, लेकिन यूनिट सोल्ड का नंबर दिखाई दे रहा है क्या?
नंबर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा है. We just see the bars, we don't see the number. We can see that Canada is on top, then France, then USA, then Mexico, and then Germany. सबसे ज्यादा यूनिट कहाँ बिका है? कनाडा। और सबसे कम? जर्मनी। जर्मनी. अब मैं पूछूं कितना कनाडा में कितना बिका और जर्मनी में कितना बिका है? तो वी कैन नॉट आंसर बाय लुकिंग एट इट. व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू गो टू द बार एंड स्टे देयर. अब आपको दिखाई दे रहा है कितना यूनिट्स बिका है कनाडा में? 247 427। करेक्ट. और जर्मनी में आ जाइए. 201 494। हाँ राइट. बट आई नीड टू मूव माई माउस ओवर हियर टू सी ईच वन. मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ यहीं पे लिख के आ जाए, इन बार के आगे लिख के आ जाए कितना यूनिट्स है. अच्छा, सबका कलर एक आ रहा है या अलग अलग आ रहा है? सेम आ रहा है, सेम। सेम आ रहा है ना? तो नाउ सी दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न इन पावर बीआई. ठीक है. तो यहाँ आपने क्या करा, ड्रैग एंड ड्रॉप से विजुअल तो बना दिया, लेकिन विजुअल बनाने के बाद इसके अंदर कितना सारा काम करना भी बाकी है. लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन ओवर हियर. इसकी हेडिंग देखिए क्या आ रहा है, सम ऑफ यूनिट सोल्ड बाय कंट्री. इज दिस अ गुड टाइटल टू द चार्ट? नो नो। नो इट इज नॉट. यू कैन रीसाइज दिस. इसको आप जैसा चाहें वैसा रीसाइज कर सकते हैं आपके कैनवास में. और भी चार्ट्स आएंगे तो हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं. अभी हम इसी पे काम कर रहे हैं. आई एम जस्ट मेक एनलार्जिंग दिस. नाउ वी विल आल्सो लुक एट इट. ओके, एक काम करते हैं, इसको अभी साइड में रखते हैं इधर. ये मैंने बार चार्ट बनाया है. लेट अस क्रिएट वन कॉलम, सेम डेटा कॉलम चार्ट. देन वील डिस्कस व्हिच वन was to be made. So I'll click on the column icon now. ठीक है, मैं ये कॉलम बना रहा हूँ, इसको थोड़ा सा बराबर हम कर देंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ. तो वी विल हैव द सेम साइज एंड टू charts we are discussing right now. One is a bar chart, one is a column chart. In the column chart visual, when I want to build something, I'll just select this. सबसे पहले इसको select करेंगे. यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है add data and build your visual. Click on this. Now here also you will get this option. X axis पे क्या रखना है, Y axis पे क्या रखना है. X axis क्या होता है, horizontal axis होता है. Y axis क्या होता है, vertical axis होता है. So in the X axis you will put the category. हमेशा whatever category you want to keep, you will put that. So in the category, in the dimension, what I want to put, country. So I can do two things. I can drag and drop. मैं country उठा के इधर drop कर सकता हूँ. तो यू विल सी द कंट्री हेडिंग ओवर हियर. अभी आपको बार नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ कंट्री दिखाई देगा. बार क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं बताइए? व्हाई आई एम नॉट एबल टू सी द कॉलम्स? क्योंकि हमने कोई वैल्यू नहीं सेलेक्ट कर रखी है या कोई नंबर हाँ. सेलेक्ट नहीं किया है। हाँ, कोई नंबर सेलेक्ट नहीं किया तो कैसे बनाएगा कॉलम, वो साइज कैसे करे कॉलम का? तो वी हैव टू सेलेक्ट अ नंबर एंड व्हाट वी वांट टू पुट इन द नंबर, यूनिट सोल्ड. अब आपने एक चीज और नोटिस किया होगा ऑन द राइट हैंड साइड पेन, यहाँ पर आपको जहां जहां पर भी नंबर दिख रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां जहां पे भी नंबर वाला कॉलम है उसके आगे क्या सिंबल दिख रहा है? सिग्मा, सिग्मा प्लस का सिग्मा. सम। है ना, देयर इज अ सम सिंबल, देयर इज अ सिग्मा सिंबल. और जहां पर भी न्यूमेरिकल कॉलम नहीं है और एक टेक्सचुअल कॉलम है, वो वाला कॉलम है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ था, वहां पे क्या दिख रहा है सिंबल? ब्लैंक दिख रहा है, कुछ भी नहीं, ब्लैंक दिख स्पेस रहा है, दिख कुछ रहा भी है, नहीं है. यस। है ना, देयर इज नो सिंबल. बस डेट के आगे कैलेंडर दिख रहा है हमें, डेट के आगे कैलेंडर दिख रहा है, लेकिन बाकी जगह पे खाली है. तो सिग्मा है या कैलेंडर है, खाली है. अब कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज सिंबल्स इन द डेटा पेन? ये खाली है और जो सिग्मा है, इनमें क्या कैटेगराइजेशन कर सकते हैं हम, इसको क्या क्या बोलेंगे इनको? और ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था फर्स्ट टू सेशंस में. मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को याद है बस. इनमें हम होल नंबर या एबीसी या डेसिमल लगा सकते हैं, और या फिर टेक्स्ट डिफाइन कर सकते हैं जो हमने पावर क्वेरी में किया है। हाँ, वो तो हम डेटा टाइप इसका चेंज कर सकते हैं, डेटा टाइप बता सकते हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इनफैक्ट, कि जो ये हेडिंग्स हैं, जो फील्ड्स हैं,
इनमें कुछ कुछ फील्ड्स में सिग्मा आ रहा है, कुछ कुछ फील्ड में सिग्मा नहीं आ रहा है। तो जिसमें सिग्मा आ रहा है उनको हम क्या कैटेगरी में डालेंगे, जिसमें नहीं आ रहा उनको क्या कैटेगरी में डालेंगे, एक एक नाम देना है, इन पूरे ग्रुपिंग करनी है इनकी में। तो ग्रुपिंग करते वक्त आप क्या कैटेगरी देना चाहोगे, इनको क्या नाम देना चाहोगे? एनीवन हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन? उमेश, स्मारक, स्मारक यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। शिवा, अभिनंदन, बताइए जल्दी से। So there is something called as dimension and there is something called as measures. क्या ये मैंने बताया था, नहीं बताया था आप लोगों को? मतलब डिड वी डिस्कस दिस? Dimensions and measures and qualitative Recording in progress. versus quantitative. Did we discuss all this? नो सर। No? अच्छा, चलिए अभी कर लेते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? द डेटा हैज टॉक्स अबाउट द क्वालिटी, एंड क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी की बात कर रहा है। तो जब हम कंट्री की बात कर रहे हैं, कंट्री की, तो कंट्री में क्या होगा? कंट्री के नाम होंगे। जब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट के नाम होंगे, सेगमेंट के नाम होंगे, डेट है तो डेट्स होंगी, प्रोडक्ट आईडी है तो प्रोडक्ट होगा, ऑर्डर साइज। अब जो ऑर्डर साइज है ये भी क्या है? क्वालिटी बता रहे हैं कि स्मॉल ऑर्डर है, बिग ऑर्डर है या मीडियम ऑर्डर है। बट जब हम बात करेंगे प्रॉफिट की, हम बात करेंगे सेल्स की, हम बात करेंगे डिस्काउंट की, तो नंबर होगा, मेजर होगा। तो बेसिकली इन एनी application, when you are dividing the when you are displaying the data, the data can be divided into two parts. One is qualitative data, one is quantitative data. The qualitative data becomes a dimension and the quantitative data becomes a measures. So when I'm creating a bar chart or when I'm creating a column chart, what I'm trying to do? I'm trying to display the quantitative data based on some qualitative data. तो मैं कंट्री के बेसिस पे, यूनिट्स के बेसिस पे कंट्रीज की रैंकिंग करना चाह रहा हूँ, या कंट्री की एक लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ, या कंट्री का एक सॉर्टिंग करना चाह रहा हूँ कि मेरी कौन सी कंट्री की सेल सबसे ज्यादा है, कौन सी कंट्री की सेल सबसे कम है। और यही काम हम कॉलम चार्ट में करेंगे अब। तो कंट्री को मैंने रखा एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या रखूंगा मैं? यूनिट सोल्ड। आई कैन टाइप यूनिट सोल्ड और टिक कर सकते हैं, या आप उठा के भी रख सकते थे। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है बताइए? The chart on the left and the chart on the right, are they showing the same sequence of the country's name? हाँ कि ना? हाँ सर। यस यस। दोनों जगह कनाडा ऊपर ही आ रहा है, पहले नंबर पे आ रहा है, और जर्मनी नीचे आ रहा है। और बार की लेंथ जो है वो भी लगभग बराबर सी है। बट एक जो है वो वर्टिकल्स बार है, एक जो है वो हॉरिजॉन्टल बार्स है। ठीक है, दोनों में कलर सेम आ रहा है कंट्री का, सब कुछ चीजें ठीक ठीक सेम सेम सी आ रही है, हेडिंग्स भी वही आ रही है। सम ऑफ यूनिट सोल्ड बाय कंट्री। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि लेफ्ट वाला ज्यादा अच्छा है या राइट वाला ज्यादा अच्छा है, कौन सा बेटर दिख रहा है, कौन सा वाला से ज्यादा अच्छा एनालिसिस हो रहा है, आप क्या आंसर देंगे? ये दोनों एट पार हैं, यू हैव थ्री ऑप्शंस। डू यू प्रिफर एनी स्पेसिफिक चार्ट, और दे आर इक्विवेलेंट, दोनों ही बराबर है, कोई भी रखिए सर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर कॉलम वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा दिख रहा है। कॉलम वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा दिख रहा है, ओके। जनरली हमको कंपैरिजन में कॉलम की आदत है, इसलिए हमें कॉलम ज्यादा अच्छा दिखता है। पर एज पर रिक्वायरमेंट्स कोई भी हो चलेगा। चलेगा, वैसे कोई भी वो चलेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक छोट दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है।
let me create one more charts with some other data now. So now I'm selecting the row chart. वापस से सेम वही कर रहे हैं हम, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ठीक है। और एक ले लेते हैं हम कॉलम चार्ट। सो आई एम टेकिंग टू डिफरेंट विजुअल, सॉरी इसी पे ये रिप्लेस हो गया। पहले हम बार चार्ट लेंगे। नाउ व्हेन यू डू दिस, सो आपको कैनवास पे आना पड़ता है, ब्लैंक एरिया पे, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। तो आपको दोनों चार्ट साइमल्टेनियसली दिखेंगे। अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है और आप कोई और विजुअल सेलेक्ट करेंगे तो चेंज कर देता है, उसी विजुअल को अपडेट कर देता है। तो मेक श्योर दैट एक विजुअल इंसर्ट करने के बाद दूसरे विजुअल पे देयर हैज टू बी अ स्पेस एंड देयर हैज टू बी अ डिफरेंट एरिया सेलेक्टेड, ब्लैंक एरिया सेलेक्टेड ऑन द कैनवास। अब हम क्या करते हैं, पहले हमने लिया था कंट्री, कंट्री तो 5 ही थी। अब मैं ले लेता हूँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ले लेता हूँ मैं, और प्रोडक्ट के साथ में ऑर्डर साइज ले लेता हूँ। ऑर्डर साइज नहीं, सॉरी, आई वांट टू टेक द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। प्रोडक्ट भी 5 ही है। एक मिनट, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है डेटा। ट्री प्रोडक्ट ले सकते हैं जो हमने वो बनाया था अलग से। हाँ वो भी ले सकते हैं, बट मैं कुछ अलग बताना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट से ही कर लेते हैं। और इधर भी मैं ले लेता हूँ प्रोडक्ट और यूनिट सोल्ड। ठीक है, इससे भी समझ में आएगा। अभी बताइए दोनों में से कौन सा वाला बेटर दिख रहा है आपको? किसमें आसानी से हम नाम पढ़ पा रहे प्रोडक्ट का, बार देख पा रहे हैं आसानी से, नाम किसमें आसानी से पढ़ पा रहे हैं? वही बार चार्ट में। बार। हम्म, in the bar chart, because the names are appearing on the left hand side and we can read the name and then the chart. इधर मुझे नीचे देखना पड़ेगा और कंपेयर करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, there are only 1 2 3 4 5 6 products only. Suppose there are 100 products, तो ये कितने कॉलम्स बनेंगे? 100। बार कितने बनेंगे? 100। ठीक है। अगर किसी प्रोडक्ट का नाम बहुत बड़ा है, मान लीजिए जैसे हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, उसका नाम बहुत बड़ा है, हमने यूएसए कर दिया था, तो कॉलम में वो बहुत दिखता ही नहीं, वो नाम कट जाता है, यूनाइटेड आके कट जाता। बट बार में प्रॉपर दिखाई देता। तो व्हेन यू हैव मोर नंबर ऑफ आइटम्स in your field, in your dimension, you should always create a bar chart. When you have a limited set of items in the field, then you should create a column chart. Do you agree with me? यस सर। है ना? देखिए मैंने इसको छोटा कर दिया। अब आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा व्हाट आई वांट टू से। तो ये बेटर दिख रहा है हमारे को देखो पैसियो में दिख रहा है कि इसकी सिर्फ बहुत ज्यादा है, यहाँ पर ये बराबर सी दिख रही सबकी, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ही है। ठीक है, सो यू कैन डू दैट। सो दिस वाज वन थिंग। ठीक है, नाउ लेट मी डू वन मोर थिंग। हाउ टू ब्यूटिफाई दिस चार्ट, इसको ठीक कैसे करेंगे, है ना? सो आई एम जस्ट renaming this and I will call it as bar and column because we are going to learn the charts visuals. So पहले हम जो चीज सीख रहे हैं वो है bar and column. I'm deleting this, just that was just for explaining you. Now I want to change the color of the bar based on the country name. ठीक है, तो what I will do first, I will apply the settings in this bar chart, फिर column chart पाएंगे। तो कलर वलर सब कुछ ठीक करना है। सबसे पहले इसका टाइटल ठीक करना है। आई वॉन्ट टू सी कंट्री वाइज यूनिट सोल्ड और कंट्री वाइज सेल्स इन यूनिट्स, ऐसा लिखना है मुझे टाइटल। और ये कोने में ना आए, ये बीच में आए। सो हाउ वुड आई डू ऑल दिस? विल कम टू फॉर्मेट। फॉर्मेटिंग करेंगे। हाँ, फॉर्मेट पे आएंगे और सबसे पहला ऑप्शन आता है साइज एंड स्टाइल, उसके नीचे आता है टाइटल, उस पे जाएंगे आप और यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट। ठीक है, जस्ट सी ऑन द राइट हैंड साइड वेयर आई एम वर्किंग। इसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि हम अभी इधर इधर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ यूनिट सोल्ड, आप यहाँ से हटा देंगे इसको एंड यू कैन सी, यू कैन राइट डाउन कंट्री वाइज यूनिट सोल्ड।
ओके, अभी भी देखिए ये चेंज तो हो गया लेकिन कोने में आ रहा है। व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं। आप हेडिंग 2, हेडिंग 1, तो ये अलग अलग चेंज कर देगा, फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर देगा जैसे ये आप ये करेंगे, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, नॉर्मल रखेंगे तो भी वैसे ही दिखाई देगा, है ना, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। हेडिंग 3 वुड बी बेटर, 3 रख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फॉन्ट है, यू कैन चेंज द फॉन्ट ऑल्सो। अगर आपको फॉन्ट कोई डार्क बोल्ड ऐसा कुछ फॉन्ट चाहिए, यू कैन सेलेक्ट दिस फॉन्ट, यू कैन सेलेक्ट द साइज ऑल्सो। तो वी आर इंक्रीजिंग द साइज, 24 कर देते हैं, ठीक है। कंट्री वाइज यूनिट सोल्ड 24। नाउ आई वांट टू पुट इट इन द सेंटर, तो यहाँ पे अलाइनमेंट चेंज कर सकता हूँ। आई वांट टू चेंज द टेक्स्ट, आई वांट टू पुट अ बैकग्राउंड कलर, आई कैन पुट अ बैकग्राउंड कलर ऑल्सो। I want to change the text color, I can change the text color also. Is it clear how I change the title? तो I went to the format section, format मैं वापस बताता हूँ कैसे गया था। मैं यहाँ पे था डेटा पेन में, मैं फॉर्मेट में गया, फॉर्मेट में जाने के बाद आई वेंट टू टाइटल। टाइटल में सबसे पहले मैंने हेडिंग चेंज करी, फिर मैंने फॉन्ट चेंज करा उसका, फिर मैंने साइज चेंज करा, बोल्ड कर दिया अगर चाहिए तो, इटैलिक करना इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज लुकिंग गुड वैसे ही। और इसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट चेंज करा, ये सब टाइटल में चेंजेस किए हैं। साइज एंड स्टाइल क्या करेगा, इसका हाइट वेट अगर आपको कुछ करना है चेंज इस पूरे उसका विजुअल का, दिस यू कैन डू मैनुअली ऑल्सो, तो हमको इसकी जरूरत नहीं होती है। सेकेंडली सम इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट लॉक आस्पेक्ट रेशियो, अभी ये अनलॉक्ड है। इसका मतलब आई कैन चेंज द विड्थ एंड द हाइट एज पर माई ऑप्शन। देखिए मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूँ, लेकिन मैंने मान लो ये बना दिया, ऐसा इस तरीके से बना दिया, और मैंने कर दिया लॉक आस्पेक्ट रेशियो। अब क्या होगा देखिएगा, व्हेन आई वांट टू इंक्रीज ओनली द विड्थ, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, हाइट भी बढ़ रही है विड्थ भी बढ़ रही है एक साथ। अगर मैं नीचे से हाइट बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो ये भी चेंज होगा, ये एक ही रेशियो में बढ़ेगा, मतलब मैं कम ज्यादा करूंगा एक ही रेशियो में होगा, ये इक्वली स्प्रेड होगा। अगर इसको बंद कर देते हैं तो फिर ये अनइक्वल साइज में आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकता हूँ ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन लॉक एस्पेक्ट रेशियो में ये सब नहीं कर पाएंगे। देन यू हैव दिस पैडिंग। पैडिंग का मतलब होता है कि स्पेस कितना देना चाहते हो अंदर से, तो यू कैन पुट सम स्पेस ओवर ईयर, तो आपको दिखाई देगा, ये देखो कंट्री जो लिखा रहा है ये बॉर्डर से कितना दूर आए, तो यू कैन पुट सम स्पेस इधर भी उधर भी, ठीक है, जैसा आपको बॉर्डर चारों तरफ जो छोड़ना है उसकी बात चल रही है, ठीक है। देन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इज ऑन, इफ यू ऑफ द बैकग्राउंड, तो पीछे वाला जो आपका अगर कोई कलर लगा होगा मान लो थीम के अंदर, वो इस पे अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज ये अपना बैकग्राउंड अलग रखेगा। मैं आपको शो करूंगा व्हाट आई मीन बाय बैकग्राउंड। आप चाहे तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, लेट मी शो दैट, लेट मी टेक सम बैकग्राउंड टू शो यू। ये मैंने कलर लिया, देखिए कलर आ गया बैकग्राउंड का। आप इसका ट्रांसपेरेंसी कम करना चाहते हैं, आप ट्रांसपेरेंसी कम कर दें, हल्का हो जाएगा ये थोड़ा सा, लाइट बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। तो दीज आर ऑल लाइक टूल्स टू इम्प्रूव योर विजुअल, टू फॉर्मेट योर विजुअल। विजुअल बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ये बॉर्डर आ जाएगा, अदरवाइज इस पे बॉर्डर नहीं दिख रहा है। अभी देखो इस वाले विजुअल पे बॉर्डर नहीं, इधर हमने बॉर्डर लगा दिया। क्लिक ऑन द विजुअल अगेन, बॉर्डर आ गया। उसके बाद शेडो ऑन करना है, शेडो ऑन कर दीजिए, ब्यूटीफाई हो रहा है हमारा, ठीक है। उसमें भी अलग अलग ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। पावर बीआई इज वास्ट, वेरी वास्ट। तो सीखना इतना आसान नहीं है, लोगों को लगता है कि हाँ हम तो खुद ही पढ़ लेंगे पावर बीआई, करके देख लीजिए, हो जाए तो मुझे बता देना, अच्छी बात है, मैंने तो खुद ने सीखा है। बट इट टुक्स लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम टू लर्न फ्रॉम योर ओन, एंड यू डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स ऑल्सो, एंड नो वन हैज टाइम, टाइम इज मनी नाउ डेज, एंड व्हेन यू आर लर्निंग विद अंडर एन एक्सपर्ट गाइडेंस, तो आपको ये सब मेहनत जो हमने कर रखी है उसका बेनिफिट मिलता है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू। अब देखिए हमें क्या करना था, आई वॉन्टेड टू चेंज द कलर फॉर ऑल माई कंट्रीज। सेकेंडली आई वॉन्टेड टू पुट द लेबल्स ऑल्सो, डेटा लेबल्स ऑल्सो। तो वी आर कमिंग टू इट। कुछ कुछ चीजें मैंने स्किप कर दी है, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम आते हैं बार्स पे।
अप्लाई सेटिंग्स टू कैटेगरी ऑल। नाउ व्हाट डू यू सी, आपको अभी ऑल करा, यहाँ पे कलर, अगर मुझे सबका ही कलर चेंज करना है, सपोज देर इज अ पैटर्न माई कंपनी फॉलोज, देर इज अ कलर स्कीम माई कंपनी फॉलोज, और वो बोलते हैं सब कुछ पर्पल कलर में चाहिए हमारे को, ठीक है, तो व्हेन यू सेलेक्ट पर्पल, ऑल योर चार्ट विल बिकम, ऑल योर बार्स विल बिकम पर्पल कलर। वो बोलते नहीं एवरी कंट्री शुड हैव अ डिफरेंट कलर, तो व्हाट यू विल डू इज, यू, अभी यहाँ पे लिखा है ऑल, उसकी जगह आप कनाडा सेलेक्ट करो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आप पहले कनाडा का कलर चेंज कर पाएंगे, तो हमने कनाडा का ये ले लिया पिंक। फिर हम करते हैं फ्रांस, फ्रांस पे जाके हमने कहा चलो फ्रांस को हम कर देते हैं ये वाला ब्लू। फिर हम जाते हैं यूएसए पे, यूएसए को हम कर देते हैं ये डार्क वाला कलर। फिर हम आए मैक्सिको पे, और मैक्सिको का हमने कर दिया थोड़ा सा ब्राउनिश। और फिर हम आएंगे, फिर ये जो है जर्मनी, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट कलर्स आई पुट टू द डिफरेंट बार्स, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू पुट अ बॉर्डर, यू कैन पुट अ बॉर्डर, बार पे बॉर्डर अगर लगाना है तो आपको ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। अभी ट्रांसपेरेंसी 0 है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे, यू विल बी एबल टू सी द बार, ये बॉर्डर लग गया, ठीक है, यू कैन सी द बॉर्डर। सर कलर पे क्वेश्चन था, हाँ यहाँ पे तो अभी तो क्या कि we have only the 5 countries, 5 or 6 countries. हम्म Suppose we have the 100 countries. So is there is any option to do the random color? यस यस इट इज, देयर इज ऑप्शन, आई एम कमिंग टू इट, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, थोड़ा सा Okay. पेशेंस, थोड़ा सा मतलब मेरे हिसाब से चलिए आप थोड़ा सा, आई गिव आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस, पहले आप बेसिक बेसिक चीज सीखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बिकॉज देयर आर सम पीपल हु आर न्यू टू पावर बीआई। तो अभी देखिए आई पुट ऑल दीज कलर्स, डिफरेंट कलर्स, अभी स्टेप बाय स्टेप वी आर डूइंग, ठीक है। वी वांट टू पुट द डेटा लेबल आल्सो, यहाँ पे मेरे को यूनिट सोल्ड दिखाना है, सो देयर इज द ऑप्शन ऑफ डेटा लेबल्स, आई एम स्किपिंग रिबन्स, ठीक है। अब इसको ऑन कर देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, रिबन क्या करता है, आपकी डेटा बार के बीच में जो जगह है ना उसमें कलर कर देता है, तो इट इज शोइंग अ कनेक्शन, बट यू डोंट वांट एनी कनेक्शन बिटवीन दीज, देयर आर नो कनेक्शन बिटवीन दीज, दे आर डिफरेंट कंट्रीज, तो हम रिबन नहीं लगाएंगे, डेटा लेबल को ऑन कर देते हैं। अब आपको दिख रहा है 0.25 मिलियन, 0.24 मिलियन, 0.23 मिलियन, 0.2 मिलियन, 0.2 मिलियन, ठीक है। इसको भी चेंज करेंगे हम, सी व्हेन यू क्लिक ऑन डेटा लेबल्स, इट विल सी कि आपको क्या करना है, सभी सीरीज पे लगाना है, यस। देन पोजीशन कहाँ चाहिए इसकी, इनसाइड एंड, अभी इनसाइड एंड है, अगर आपको बाहर चाहिए, आउटसाइड एंड चाहिए, तो ये बाहर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये बड़ा नहीं कर रखा अभी, तो ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, व्हेन यू ड्रैग इट एंड मेक इट बिगर, यू विल सी कि आउटसाइड में दिखाई देंगे आपको ये। आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा लेबल्स राइट नाउ। इफ यू वांट टू पुट इट इन द इनसाइड सेंटर, तो बीच में दिखाई देंगे, इफ यू वांट टू पुट इट इनसाइड बेस, तो बेस में दिखाई देगा, डिपेंडिंग कि आपको कहाँ दिखाना है, ठीक है। वी कैन कीप इनसाइड सेंटर, ठीक है, या इनसाइड एंड कर लेते हैं, दैट वाज लुकिंग बेटर। नाउ टाइटल, अब ये क्या चीज का टाइटल है, ये आपका सीरीज का है, आपको क्या दिखाना है, सीरीज नेम दिखाना है, आपको कंट्री नेम दिखाना है, ठीक है, आपको कुछ और ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है, इस यूनिट सोल्ड के साथ उसका सेल्स भी दिखाना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम ऑर्डर साइज कर लेते हैं, इसको मान लीजिए ऐसे ले लेते हैं, तो देखिए ये बता रहा है बल्क ऑर्डर है, बल्क ऑर्डर है, बल्क ऑर्डर है, मीडियम ऑर्डर है, बल्क ऑर्डर है। तो हमने ये कैटेगरी दिया, इनसाइड वन चार्ट यू आर एडिंग मल्टीपल थिंग्स, आप जीपी रेशियो दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए यूनिट सोल्ड के साथ उसका जीपी रेशियो दिखाना चाहते हैं, यू कैन क्लिक ऑन जीपी रेशियो एज वेल, लेट मी शो यू प्रॉफिट परसेंटेज, ये मिलियंस में आ रहा है, इसको हम चेंज करेंगे परसेंटेज में, तो वो हमारे को परसेंटेज भी दिखाएगा, ठीक है, एवरेज कर देते हैं इसमें, यू हैव टू, और डिस्प्ले यूनिट्स, डिस्प्ले यूनिट्स में जाके आप कर देंगे इसको नन, तो ये पॉइंट्स में दिखा रहा है, ठीक है, इसको डेसिमल वैल्यू को कर दीजिए 2 प्लेसेस, तो ये 2%, 2 उसमें दिखाएगा, और अगर आपको परसेंटेज में करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स विच कैन बी डन
इन पावर BI। कस्टम में जाइए और कस्टम में जाके फॉर्मेट में जाइए। फॉर्मेट में हम ऑटो की जगह हम क्या कर सकते हैं, देर इज अ फंक्शन टू इट, एंड यहाँ पर आपको अलग अलग चीज मिलेगी। ठीक है, सो वील कम टू इट। ठीक है, अभी हम इसको हटा देते हैं। अभी आई विल कीप द ऑर्डर ओनली। मैं यहाँ पर बल्क ऑर्डर, ये ऑर्डर साइज लिख देता हूँ। ठीक है, Sir, we can make the small to large baths, like we have a ups and downs na? So we can make the small bath to higher on basis of values. sorry, I did not get you what you are saying. What we can do? The countries the values taken, first one is Canada high, so we can make it sort it smallest value. Acha, you want to have Germany on top and Canada on bottom? Is it what you are saying? Is it what you are saying? Yes, yes, yes. Okay, yeah, I'm showing you. I'm coming to that. Now see, I don't want to see on millions. I want to see in thousands. So I can go to this field value, and in that value, I can make it thousands also. So it is giving me 247K, 241K, 233K, 203K, 201K. If you want to see the actual numbers, you can say none. It will show you actual numbers also. But that doesn't look good in charts. We can make it billion, million, or thousands. If you want to increase the font size, that is not looking proper. If you want to increase the font size, you can increase the font size. If you want to make it bold, you can make it bold, whatever. Okay. And if you want to add a background, you can click on background. So this will also have a background. So these are different. There are different things which we can do. Okay. Now, as you were mentioning, I want to sort this. I want to have Germany on top and then Canada on bottom. I want to sort this. How do I apply sort in the data, in the chart? How do I apply sort into this thing? So you will go to y-axis. In the y-axis, okay, this is formatting. You'll go to build a visual. Okay, you'll go to build a visual. Now you see all these options over here. Y-axis. Y-axis is country. X-axis, sorry. Now in the bar chart, your y-axis will have the country name. Suppose I want to make them bold. Okay, the country name should be bold. So what I'll do is I'll go to format again, and we have to go to y-axis. Y-axis, you will just click on bold. Do you see the country names getting bolder? Yes, yes. And we can increase the size as well. We can increase the size as well. Okay. And on the x-axis, this is a range. So it is taking in million. Suppose you want to change the range, you can change the range also. So if I put 1, it is taking in thousands now. If I make it like that, so you can change it to 1,000 or million, the way you want. Okay, or you can keep it auto also. Then if you want to invert the range, you can invert, but that doesn't look good. We'll not do that. Secondly, what else I wanting? Yes, you want to change the reverse order that I'm going to show you now. Okay. So these are some things that you can do in the format pane. Once you have done this, you will go to the build a visual, and on the x-axis, we have the sum of units. Here, we want to reverse the order. So what we'll do is, there is that option. So you have to go to the filter visual here,
And see here, will be an option of sort, sum of units sold, and there will be an option of sort also. If you apply filter, then it will hide some other things. We want to apply sort. Sort by column, units sold. Sort descending we can do. Okay. So it will take the first, or we can do sort ascending. So it will do take the first, like the lesser unit first, and then this. Now see. There is an option to sort. I'm just give me a moment. See, when you create a table, I'll just give you one example. Suppose we have this category of order size, bulk order, medium order, and small order. I want to see like how many orders we have got in each category. So I have selected this. Now I will add units sold over here. Units sold. I have got these units sold over here, right? So it is showing me bulk order has got 88,918, medium order is 9,13,000, and the small order is 1,22. Now I want to sort them. So in the table, you can directly sort by clicking on this button over here. Okay, so there is an option to sort the data. Now we have sorted is based on the units sold. Like the highest unit is medium order, then small order, then bulk order. So in a table, it is possible easily
But in case of a bar chart, also it is possible, but we need to see like how that is possible. I'll show you that tomorrow, how we can change the Okay. sequence of this. Yes, I'll show it tomorrow. Okay. Yeah. So now suppose the same settings I want to apply to the column chart. Okay, since we are now towards the close of the session, the same settings what I've done here, I made this beautified, but I have to do the same thing. It will take a lot of time. What I can do is I can just hold this, and there is a paste spatial button over here. Do you see the format printer button over here? So when you click on this and you click on this chart, do you see the same thing happening? Same pattern we could do in this, but the title is not changed because title is specific. So what you need to go do is you go to this, you set the title, and then you copy paste the title. You type country wise units sold. So see how easy it is, how simple it is, but you should know the things. If someone who doesn't know that format printer can be used, then waste time in creating manually. Then your headers is not appearing properly. So that is what I was explaining. See, if you have limited space and you want to do that, that is what the problem is. Now, suppose I copy this chart in a new page. So I'll copy this chart and let me paste it in a new page. I increase the size. Now, are you able to read everything properly? Yes, yes, sir. Now we are able to read everything properly. But in this particular case, here I can read everything properly, but here I'm not able to. So when the space is limited, which is a better option? Which is a better visual for me now? Obviously the bar chart. So we need to understand this. Okay. Yes. Any more questions? We'll close here. We'll stop here. No, sir. Okay. So I'm Okay, thank deleting you. this. Yeah, Abhinandan, I'm coming to you. Abhinandan, I'm coming. Just give me 1 minute. Could you share the data with me in the chat if it is possible? So what we have done is this file I will share in the group. Now what I'll do is, you all people are registered. You've already registered. I guess everyone is registered now. Those who are attending. Abhinandan was already registered before. Smarak, I know, is registered. Umesh is also registered. Shiva, you are also registered, right? So all of you, I will create a separate group with you all. Okay. And I'll add you there. And whatever we are doing on a daily basis, I'll share the PBIX file with you so that you can see what is being done. But what I would recommend is that you practice. Okay. If you don't practice, then things will become complex every day. Things will become complex every day. So keep on practicing. Okay. And if you have any doubts, you can put it in the group. It will be a closed group. The other group which I created, it has other members also, but they will take time to decide whether they want to join, not join. They might be there for different reasons in the group. But I will create a separate group of registered students. Okay, those who have paid the fees and those who are there in the batch. And we will share all the workings and everything, all the notes, everything in that group. You can put your queries also in the meantime. Whenever you are revising Power BI and you get any question, any query, you can put it in the group. And not only me, but someone else who knows the answer can initiate and answer the query. That way, it will be a healthy learning. We will learn as a group, not only I am being the mentor, I'm teaching you, you can teach each other also. So let's there be that kind of brotherhood in the group, and you can all teach each other as well through your queries. And one query help many.
So if Abhinandan is coming up with some questions, it will help everyone. If Shiva is tomorrow coming up with some question, it will help all. So don't hesitate in asking question and take the best utilization of it. Okay. So this is what I wanted to convey. I'll just wait. I'll just stop the